economist, it focuses on the opportunities of the Indian economy, and we want to familiarize our economic operators with these opportunities so that both parties can satisfy the needs of each other. It is essential since those are solid and multifaceted ties between Russian and Indian businesses that are one of the main pillars of special and privileged strategic partnership of our countries. Indeed, Russia and India are long-time trade partners. Trade volumes are growing at a sustainable pace, and over the past 3 years we saw a record increase of up to 80%. As a result, last year the Russian-Indian trade volume reached $64 billion. At the same time, it's obvious that there are vast opportunities for further increase of bilateral trade and investment. Russia and India have big consumer markets and an impressive economic, technological and resource potential. Once again, I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. Today, the Indian economy is one of the fastest growing in the world. Figures speak for themselves. Over a decade, the GDP of the country has almost doubled, and in terms of the purchasing power parity, it increased by 2.5 times. Thanks to the sound economic policy and such landmark initiatives by Prime Minister Modi as Make in India program, India is strengthening its technological sovereignty. The Indian processing and light industry, IT sector and pharmaceuticals take leading positions in the world. In Russia, we study the Indian experience with interest, and it is used in implementation of our national programs of import substitution and localization of products with high value added. The leadership of two countries, and Prime Minister Modi and I in person, pay particular attention to deepening multifaceted economic ties between Russia and India. Following today's negotiations, we adopted the program for the development of Russian and Indian economic cooperation. This comprehensive document aims at making sure that we can achieve the goal Mr. Modi and I set for ourselves, so that we can increase the trade volume by 2030 to $100 billion. It requires most active efforts of business communities from both countries, aimed at further expanding and diversification of trade volumes and building balanced structure of reciprocal trade. Given the significant trade deficit of Russia, the Russian business, our companies, are ready to manifold increase the purchase from India of a widest range of goods and services. We are interested in it, dear friends, because it makes our economy more resilient. From their part, Indian entrepreneurs, as was demonstrated by the forum, are equally interested in trading with Russia. They have something to offer, so the synergy is obvious. So it would only be logical that projects contributing to greater supplies of Indian products to Russia receive priority attention in implementation of the new export support program recently adopted by the government of Mr. Modi. From my part, I would like to assure the business circles that all useful initiatives aimed at development of mutual economic exchanges will be further supported by Russian ministries and authorities. No doubt, the key role in creating conditions for a truly free trade between our countries is played by the Intergovernmental Commission. It is important that together in close cooperation we eliminate the Romanian customs and administrative barriers which stay in the way of reciprocal movement of goods, services and capitals. In this regard, a strong impetus, as it seems, could be given by rapid signature of a preferential trade agreement between India and the Eurasian Economic Union. Free trade is unthinkable without a resilient system of bilateral settlements and reliable payment and insurance mechanisms. Tangible advantages are offered by the use of national currencies.
It makes it possible to ensure uninterrupted financial transactions regardless of external developments. And obviously, accessibility of transport and logistics communications plays a crucial role. A lot is already being done in this regard. Implementation of the project to create the corridor south-north from Russia and Belarus to the Indian Ocean is ongoing. And infrastructure modernization of the Northern Sea route is being modernized in order to use it for the supplies of Indian goods to the world markets. Obviously, the cooperation of our two countries should not be limited to trade alone. We should move on and enhance our industrial cooperation. Together, we should create new cutting-edge products and strengthen technological alliances. First and foremost in such advanced and knowledge-intensive sectors as digitalization, autonomous robotics, pharmaceuticals, including synthesis of efficient pharmaceuticals and production of high-tech medicine equipment. We are ready for broad cooperation with India in the field of artificial intelligence, where our countries have already advanced a lot. Russia is interested in participating in the as I've just mentioned it to Prime Minister, we are ready to participate in the Summit on Artificial Intelligence, scheduled to take place in India in February 2026. We will send a representative delegation. In conclusion, I would like to stress once again further strengthening of Russian-Indian trade and investment ties and close cooperation between business communities effectively contributes to economic growth and development and greater well-being of our citizens, and therefore it meets the fundamental interests of our countries and peoples. I would like to wish to the participants and organizers of the forum all the best. Thank you for your attention. Thank you, Excellency, for sharing your vision on the immense potential of bilateral trade. Excellencies, now I respectfully invite Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his concluding remarks. Your Excellency, my friend राष्ट्रपति पुतिन, भारत और रूस बिजनेस के सभी लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। इंडिया रशिया बिजनेस फोरम, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति पुतिन का ये बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर के आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरा भी आप सबके बीच आना एक बहुत प्रसन्नता का अवसर है। इस फोरम से जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है और साथियों, हम अलग अलग विषयों को लेकर के भी, जैसा अभी पीयूष जी ने उल्लेख किया था और जैसा राष्ट्रपति जी ने जो संभावनाओं का वर्णन किया है, उसे देखते हुए हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। ये हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें
नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है, लेकिन साथियों, इन प्रयासों की असली शक्ति आप जैसे बिजनेस लीडर्स हैं। आपकी ऊर्जा, आपका इनोवेशन और आपका एम्बिशन, यही हमारे संयुक्त भविष्य को आकार देते हैं। फ्रेंड, पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं, वह अभूतपूर्व हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की और आगे बढ़ रहा है। और 11 वर्षों की इस रिफॉर्म यात्रा में हम न थके हैं, हम न रुके हैं। हमारे संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हैं और हम लक्ष्य की दिशा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और कंप्लायंसेस में कटौती, ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। आप सभी के सुझावों और प्रयासों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी ओर से हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विचार आपके सामने मैं रखता हूं। पहला, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। For all the latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel.